ये मेरे एसेट सेट पे रिलायंस क्यों है? तो बोलते बेटा यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। हैं? अगर मैं ओनर तो हम वैगनार में क्यों घूम रहे हैं अभी तक? तो ऑलवेज फोकस ऑन हाउ कैन यू इंक्रीज योर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड योर इनकम विद इन दोज सोर्सेज। So like you said, पैसा बहुत आता है. You get income from multiple sources. या How do you manage all that money? हर एक प्रोफेशन में पैसा है. अगर आप बाल अच्छे से काटना जानते हो जावेद हबीब बन जाओगे, राइट? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप an eye for opportunities. It's very important to try them. It's very important to fail. It's very important to come back again and try again. Women are a little attuned towards managing finances well. It's just that they don't have the confidence to do it themselves. Have you heard of somebody that quit the CA path, got invited back by the CA Institute as a keynote speaker at one of their national conferences? Sounds crazy, right? He is one of the first friends that we made in the industry, Sushant Bindal. He's a speaker, entrepreneur, and first and foremost, he's an educator. He proudly wears that badge and he's taught a lot of people about finance, trading, and investing. Here's Sushant Bindal. Thank you so much. From the path of following your family, to become a CA, to dropping out of it, you've come a long way. You also want other people to experience the different aspects of success and failure. Yes. What do you have to say about that? 100%. Yeah. Like I come from a CA family, right? I have 18 CAs in my immediate family. So of course, being the eldest grandson, I was supposed to carry on the family tradition and have a firm. My grandfather was the first CA of Rajasthan. So had a lot of pressure there. But at the same time, they were all very open to my ideas. Ki, what do I want to do? So doing a job is a crime in my family. You can never do a job. Like right from the moment we are born, डीमैट बन जाता है, एक नया शेयर होल्डर पैदा हुआ है, ठीक है. एवरी बर्थडे वी गेट ETFs इन आवर डीमैट अकाउंट. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि 20 के जब तक हो जाओगे तब तक तुम्हारा स्टार्टअप का सीड फंड तुम्हारे पास होगा एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. सो दैट्स ऑलवेज देयर. तो वो पैसा देखते देखते मेरे को बहुत ऐसा था कि कुछ तो करना है, ऐसे कुछ तो करना है करके. सो बीच में व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आई वाज इंटर्निंग एट BSc. माय सीनियर वेंट फॉर अ सेमिनार एंड आई लव स्टेज. मुझे बोलना बहुत पसंद है. तो मैं उनको रास्ते में बोल रहा था कि आप है ना ऐसे गलत बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये करते हो, वो करते हो. तो लाइक एक काम So कर. you're telling all this to your senior? हाँ, डायरेक्टर ऑफ BSc. अच्छा. Who is right now the head of BSc. तो and then he got pissed. Then वहाँ सेमिनार में गया, he got on the stage, he's like I'm not gonna speak today, Sushant is gonna speak today. And audience में RBI के लोग, CFOs, banking professionals and everyone. I'm 19-year-old and I gave a 2.5 hour speech there. A few people got impressed. They came to me, they're like, why don't you manage our funds? The way you think is really good. And that's how I started. Wow. So how did your journey in the field of finance begin exactly? So I really remember कि I have been going to my dad's office, to my granddad's office from 5th, 6th standard, right? And he used to show me this balance sheet of mine. तो डैड बीइंग हिमसेल्फ, उनको सबकी बैलेंस शीट बनाने का बड़ा शौक है, चाहे कुछ हो नहीं उसमें. तो इन दी एसेट साइड आई यूज्ड टू सी, यू नो, रिलायंस, टाटा, ये सब. और इतना घर में आप मनी फाइनेंस सुनते हो तो आपको पता है एसेट क्या होता है. आई एम लाइक कि ये मेरे एसेट साइड पे रिलायंस क्यों है? तो बोलते बेटा यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी. अब बोला हैं? अगर मैं ओनर तो हम वैगनार में क्यों घूम रहे हैं अभी तक? तो देन ही एक्सप्लेन्ड मी द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? इक्विटी मीन्स ओनरशिप एंड दैट वाज वेरी इंट्रिगिंग टू मी. So I started studying more about it. I got into taxation. I started auditing companies जो हमारी फॉर्म में आती थी. तो जो ऑडिट हो गई है वो फाइल्स मेरे पास मेरे को देते हैं और मैं उनकी सेल्फ ऑडिट करते रहता था. एंड आई यूज्ड टू फाइंड आउट मिस्टेक्स एंड ऑल. तो आई फाउंड वन मिस्टेक इन बिट्स. बिट्स का पूरा जो ऑडिट हुआ था उसमें मैंने मिस्टेक निकाला विच वॉज वर्थ अलॉट. तो दोज थिंग्स हैपेंड. तो वो इंटरेस्ट फाइनेंस में, टैक्सेशन में, मनी में, ऑल दोज थिंग्स हैपेंड नेचुरली टू मी. तो दैट वाज द केस की, और समझ में आ गया कि पैसा तो बहुत है. तो फिर आई एम लाइक व्हाई नॉट. नाइस. But then why did you drop out of CA if your family बहुत बोरिंग था. बहुत बोरिंग था. मतलब पर आपको तो फाइनेंस में इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ दिस. उस प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं. देख लिया घर पे सबको और सबकी बोरिंग लाइफ थी. बोला ये लाइफ मैं नहीं जी सकता. सो आई थैंक देम फॉर मेकिंग मी सी इट. ठीक है. So now you're running like 3 businesses, maybe even more that I don't know of, and you're probably invested in a couple of businesses too. So how do you manage all of this? How do you manage to give your time, attention to all these multiple businesses?
So ideally, I'm running one business only. The others, I'm more of an enabler than a founder capacity, right? So that's the main thing which I do. That is money monitors. जिसके अंदर we teach people how and all those things, right? Finance के सारे categories. We teach them finance में upskilling, personal finance, investing, and all those things. The second category we created is when people want to make a career in finance. Okay. So they can do IB, PE, VC, and all those things. We have teachers there. Then we are now entering into the academic category where we'll be teaching CFA, FRM, actuaries, and all those things, right? So that's the main thing which I run by myself. Second is बाकी जो जितनी भी है bench labs है तो उसके अंदर I am more of an enabler. The two co-founders they take care of the entire thing. So I enjoy that कि अच्छा ठीक है. I love I have found myself कि if there's someone who I get impressed by and I think I can bring either business acumen or contacts or something else to the table, I'll offer them कि let's do something together. And that is something which I'm enjoying from last I think 2 years now. So I am on the look of people who I can partner with, and I can maybe bring something to the table for them. So that's what I'm enjoying right now. It's crazy. मजा आता है बहुत और पैसा भी बहुत आता है. That's how it is. That's nice. So, like you Yeah. said, paisa bahut aata hai. You get income from multiple sources. Yeah. How do you manage all that money? So initially initially I started managing funds, right? तो वो company बेचा तो उस time पे I was very much into stock market पूरा regularly track करना and all those things. So that time it was easier for me कि जो हमने clients को recommend किए portfolios वहीं पे हम लोग का भी invest हो रहा है, dad का, मेरा पूरा family का and all those things. But now I've थोड़ा सा got away from it. Okay. So now it's majorly थोड़ा aggressive चला गया हूँ, maybe into startups more and more. थोड़ा आउट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट्स हो गया, थोड़ा इंडिया का इन्वेस्टमेंट्स हो गया, मतलब मार्केट्स में ही. तो अभी इट्स So मोर when you ऑफ say लाइक अ markets, पैसिव you're थिंग. buying stocks or mutual funds or like how? सो इट्स अ मिक्स, राइट? यूएस में ऑफ कोर्स स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, उधर ईटीएफ्स भी हैं और म्यूचुअल फंड्स भी हैं. ड्राइव वेल्थ इज द कंपनी जिनके साथ हमने टाइप किया था, उनके थ्रू ही हम लोग सारे क्लाइंट्स का हमारा करते थे. सो दैट इज देयर. इंडिया में इट्स मिक्स, इट्स स्टॉक्स आल्सो, इट्स ईटीएफ्स आल्सो, इट्स म्यूचुअल फंड्स आल्सो. सो इट्स अ गुड मिक्स. So yeah, that's what it is as of now. Nice. Maybe I don't keep a track of markets right now, because if I get into markets, then I'll like invest my 6-7 hours a day in the markets only. Yeah, that's how it works with the So- markets. I mean, if so you can't zabardasti I keep away from it. Yeah. put in that kind of time and effort Yeah, to track it on a daily basis, then I don't think it's worth It's impossible. sort of doing any kind of If you're doing that, stock you're just trading. doing that. Yeah, Yeah. it's just that. You're just doing that. Correct. If you can't be like, "Kya, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ." So right now I think I'm at that phase जहाँ पे I want to explore more and more things than just sitting in front of a screen and trading. Right. Right. That's what it is. So what advice would you give to somebody who is sort of just starting a business of their own, Mhm. or just starting to earn in the early stages of their life, Mhm. even doing a job? What is your like most relevant piece of advice that you can give them? So for business, I would give them to make as many mistakes as they can, right? Because I have pivoted a lot in my own company, and जितना pivots हुआ वो mistakes की वजह से हुआ, and that led us to where we are, right? So that's very important. One thing which I suffered with was delegation. I tried to do everything on my own. If I am starting a business, मेरे को Siley has raised her hand saying that is number one mistake. Exactly. Maker Siley. हाँ, मतलब मेरे को कुछ कंटेंट भी डिजाइन करना है, कैनवा पे मैं ही बैठ रहा हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग में सीख लिया, कोडिंग में You सीख are लिया. looking at your सब- twin. Yeah, I know that. तो मतलब सब कुछ I'll try to do. So and that was the biggest mistake, right? Because then I am too occupied with that, so I can't do other things, right? So you have to sometimes trust people, and then even when the output is 80% of what you want, it's okay, because they'll learn and they go further, right? So that is something which should be taken care of. And for someone who has started earning, what is important is for them to know what not to do. So the normal trajectory is कि if you start earning, you take a credit card, you take an iPhone, sneakers, blah blah blah. वहाँ का तुम्हारा credit card का EMI शुरू हो गया. थोड़ा सा if you let's say get a raise, you get a car loan, you start paying that off, and then you get a home loan, and you know. So you're start paying literally off like that. you're saying that don't get into the whole like loan That's- cycle. So I'll tell you the problem with that. ठीक है? तो अब मेरा घर, मेरी गाड़ी, सब चीज का EMI फिक्स हो गया, right? Now let's say I have to pay an EMI of 1.5 lakh rupees a month, combining all these things. I'm making 2 lakh rupees, 2.5 lakh rupees a month, right? Now, if let's say I get an idea to start a business, okay, I won't be able to, because the business doesn't guarantee me that 1.5 lakh rupees of EMI. Now I'll start hating my job, and इसीलिए you see people unhappy कह रहे हैं ये तो job ही घटिया है, यही सब घटिया है, because they want to leave it, they can't, because they have themselves trapped into that, right?
सो फिर या तो वो उसी पे कंटिन्यू करेंगे या वो और डेट ले लेके डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, राइट? सो दैट्स समथिंग So व्हिच it's a शुड नॉट बी डन. vicious cycle that Yeah, you exactly. can't really get out of. एग्जैक्टली. तो उधर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कि अच्छा थोड़ी एक्सपेंस प्लानिंग कर ली कि अच्छा ये एक्सपेंसेस मेरे हैं, एकदम कंजर्वेटिव पे करो, एकदम नहीं फर्क पड़ता, बट जैसे आप हो वैसा करो. आपको लगता है कि आप ये लग्जरी खर्चा करोगे तो उसको लिखो कि तो खर्चा होने ही वाला है. तो दैट्स हाउ इट इज. वो प्लानिंग कर लिया, उसके बाद आप देखो कि कैन यू सेव एटलीस्ट 20, 30, 40. ये बिकॉज स्टार्ट करो तो इतना पॉसिबल है सेव करना, बिकॉज आई कैन अज्यूम कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो डिपेंडेंसी कम है उसके ऊपर, पेरेंट्स की या फिर पार्टनर की और व्हाटएवर, राइट? तो यू कैन सेव दैट मच एंड मे बी इन्वेस्टेड और व्हाटएवर, राइट? तो वो इम्पोर्टेंट है ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ कि अपना लाइफस्टाइल आप इन्फ्लेट कर लो जैसे you start But this earning, right? realization doesn't really hit people until it's a tad bit too late. Don't you think? I mean, Yeah, that's the the case with first everyone few now. years of your life just go by. Hmm. For most people, even those who are working a job, Hmm. you don't think about saving. It's not on your priority list. Hmm. And then you're at that age where you're like, shit, तभी तो लाइफ I have no में savings. तभी तो लाइफ में काश वर्ड का यूसेज बढ़ जाता है. काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता, काश में ये खर्चा नहीं करता, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो दैट्स आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स. अगर थोड़ा सा आप माइंडफुल हो इन चीज़ों के, तो आई थिंक उधर एक प्रॉब्लम भी ये है कि when people start learning about finance, right? If someone, let's say, is into medical background, right? अब उनको finance समझना है, तो अब होता क्या है, मेडिकल में आप पढ़ रहे हो, इतने साल पढ़ रहे हो, right? And then अचानक से you start doing a lot of money because it is good money, right? Now I don't know what to do with that money. तो the problem with there is कि अभी सबका source of information, source of education is maybe short form content. अब उसमें the problem I have is कि उधर you cannot capsulate an entire concept, right? और इसमें finance specific में half knowledge is more harmful than no information at all, Yeah. right? So I'll not understand all the sides of it. So I think it should be sometime which I am planning right now. I have collaborated with a few institutions जहाँ पे we are including finance education right from 9th standard, right? Wow. तो 9 to 12 के लिए we're making a separate curriculum altogether कि Yeah. उनको उस टाइम पे अगर समझ आ गया तो they will at least know what not to do, so that they are more mindful about it. And Yeah. उसका importance समझ में आता है, right? Yeah. Because तब तक अगर आप मान लो if let's say I'm doing MBBS, right? और BTech और whatever, and मैं अपने डैड से बोलूंगा कुछ फाइनेंस की बात करना, वो बोलेंगे अरे तू बच्चा है अभी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे. That's the main problem. क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हो, इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो, उसको पता ही नहीं चलेगा. He doesn't know कि आपने डेट लेके उसका एजुकेशन लोन लिया है, ये किया है, वो किया, उसको पता ही नहीं है. वो फ्री है. तो जैसे ही वो कमाना शुरू करेगा, they'll start spending because you have not let them spend also. तो जितना रोकोगे उतना वो ज्यादा करेगा, राइट? तो दैट्स वो साइकोलॉजिकली और काफी चीजें कंबाइन होके वो मिस्टेक्स होती है. तो दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड ऑन द रूट लेवल. तो वहां पे उन लोग को राइट इन्फॉर्मेशन, राइट एजुकेशन मिलना जरूरी है ताकि दे कैन टेक बेटर चॉइस, दे मेक बेटर चॉइसेस इन देयर लाइफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस. Yeah, this is absolutely true. Actually, Indian families are attuned to not discussing money matters at all. Yeah, It is 100%. something that doesn't get spoken about. Even when children are of age like 18, 19, 20, तभी तक भी money matters freely घर पे discuss होते ही नहीं है. What is your thought on that? How do you think people should tackle this situation? How can you make money conversations easier with friends and family? So I'll tell you what my parents did with me, right? तो हर चीज मतलब I right now my flatmate, उसको बैंक में जाके एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना नहीं आता ऑफलाइन, because he's never done it, right? But I remember कि even when I was very very young, तो भी बैंक में अगर कुछ NEFT करवाना ये करना, डैड विल सेंड मी कि तू खुद जा बैंक में जा, ऑफलाइन करके आ, वो फॉर्म भर, ये कर वो कर ये कर वो कर, एंड ही विल लेट मी फिगर इट आउट ऑन माय ओन, राइट? सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ अ सेंस of how the entire money ka concept works at the root level, right? So I always tell everyone ki I'm very privileged. Now the privilege comes from the exposure I got especially into finance and the overall concept of money, right? तो अगर मान लो मेरा सैलरी भी जा रहा है, अगर सैलरी क्या फीस जा रहा है अगर मेरे कॉलेज का या स्कूल का या किसी का भी, तो वो मेरे अकाउंट से होगा, मेरे नाम के अकाउंट से होगा, मेरे सिग्नेचर होंगे, सो आई फील कि अच्छा मनी इज गोइंग आउट, राइट? So all those things actually helped me understand money better, कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, and that is how I was able to make decisions properly, right? So same thing should happen. पेरेंट्स को जितना इन्वॉल्व हो सके करना चाहिए. ऑफ कोर्स आप उनको प्रेशर नहीं डालोगे, देख तेरे लिए लोन लिया है हमने, उसको वो डिप्रेस मत करो, बट ऑफ कोर्स इन्वॉल्व देम इन सम थिंग्स, राइट? टीच देम अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है. सो वो बड़ा जरूरी है. इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम होम. when parents start talking about finances, money, that's when the children will be interested and they will learn more than actually just randomly just going to it, right?
That's Yeah, it. yeah. I think that's very true. Even for me, Hmm. as a kid, my parents were fortunately very open to Hmm. discussing money Hmm. matters Hmm. and their investments and Hmm. what they did with their savings. Hmm. So literally, I've said this a lot of times, but when I earned my first paycheck, Hmm. like any normal person, I wanted to blow it up. Hmm. But my mom was like, no, no way. Hmm. You Hmm. will invest this. Hmm. She had decided mutual funds तीन नाम दिए थे. Hmm. इसमें SIP करेंगे. And I Hmm. was like, no, but I want to spend it. Hmm. And you're right, even I come Hmm. from a privileged family where Hmm. she was like, no, Hmm. if you want to do some kharcha, I will give you some money on Hmm. the side, but Hmm. you have to invest your Hmm. salary. Hmm. You cannot just blow it all up. Hmm. So it got put into my head very early on Hmm. that यार जो भी $5,000 I had received, Hmm. invest तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. Hmm. हाँ, बाकी मैंडेटरी हो जाता माइंड में, अपने बैक ऑफ द माइंड में कि ये exactly, तो it's हैबिट just है. it just became a habit. Yeah, So it has to then be a when I habit. gradually started moving from one job to the other and Hmm. started earning more, this became a part of my routine Hmm. कि यार इन्वेस्ट तो करना ही है. 100%. अभी वही तो प्रॉब्लम है ना. सो पीपल व्हेन दे डोंट इन्वेस्ट राइट एंड दे गेट ट्रैप्ड इन दिस एंटायर सैलरी ईएमआईज एंड ऑल दोस थिंग्स, तो यू डोंट रियलाइज कि व्हेन यू हैव डिपेंडेंसी ऑन यू, you don't realize कि when you have bigger खर्चास coming, मान लो शादी करना है, ये करना है, वो करना है, and that's when they also end up taking more debt or falling in more, right? So उधर वो सब प्रॉब्लम हो जाता है. तो Yeah. अगर वो चीज़ स्टार्टिंग से हैबिट नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा. अगर Abs- ऑन दी कॉन्ट्री, लेट्स इमेजिन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, अगर मैं 20%, 10%, 30%, वट एवर द अमाउंट इज, इफ आई वुड हैव केप्ट असाइड एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, तो एक फंड मेरा बन जाता है. एंड कुछ भी अगर खर्चा आ रहा है बड़ा, तो आई नो कि अच्छा वहाँ से हो सकता है, तो वो ईज रहेगा. correct. मुझे अगर स्टार्ट भी करना है, मान लो कुछ एक्सप्लोर करना है, बिकॉज आई थिंक 20s इज द एज व्हेन यू कैन एक्सप्लोर मोर, राइट? 30s में थोड़ा डिपेंडेंसी आता है, थोड़ा रिस्क आपकी टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, राइट? तो 20s में अगर मुझे एक्सप्लोर करना है और थोड़ा सा फंड साइड में है, तो वो कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ठीक है, 3 महीने तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, भूखा नहीं मरूंगा, तो आई कैन डू दिस, आई कैन एक्सप्लोर दिस, आई कैन एक्सपेरिमेंट, आई कैन रिस्क इट. So it's very important, yeah. So even though you come from a privileged Hmm. background, I Hmm. believe now that you are very financially independent Hmm. with all your businesses Hmm. and all your Hmm. different sources of income coming in. You're financially independent. Hmm. What tips can you give people Hmm. on how they can become financially independent? See, I won't say कि इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो. आई वुड से कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पहले कमाना जरूरी है. सो always focus on how can you increase your sources of income and your income within those sources. That's the most important thing. उसके बैकग्राउंड में अगर पीछे जाओगे तो आपको कोई ना कोई सी स्किल पकड़नी पड़ेगी. सो आई ऑलवेज से पीपल कि यार, people try to figure out कि गूगल करेंगे what is the highest paid job in 2024, what is the highest paid profession, right? हर एक प्रोफेशन में पैसा है. अगर आप बाल अच्छे से काटना जानते हो, जावेद हबीब बन जाओगे, राइट? हर एक प्रोफेशन में बहुत पैसा है. इट जस्ट डिपेंड्स कि हाउ गुड यू आर एट इट. सो उधर है ना, द रोल ऑफ इंटर्नशिप्स इज व्हाट आई से कम्स इन, कि व्हेन यू आर इन अ कॉलेज और समथिंग, इंटर्नशिप्स में आप 1 महीना काम करके निकल जाओ, कोई मना नहीं कर रहा आपको, राइट? तो आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो. आई माइट थिंक दैट जो मैं वो गूगल ने दिखाया है कि ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है, दैट इज द बेस्ट थिंग आई वांट, राइट? बट वो डेटा साइंटिस्ट बोल देगा और मुझे नहीं पसंद आएगा. बट वंस यू एक्सप्लोर दैट फील्ड प्रैक्टिकली, moving beyond the screens and actually doing it, that's when you might realize कि अच्छा, this is not for me, right? तो वो ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल सारा कर लो. 1 साल, 1.5 साल, 2 साल खुद को दो अपने करियर के साथ साथ, कि जहाँ पे आप सारा हिट एंड ट्रायल कर लो. फिर यू कम टू दैट वन थिंग, दिस इज समथिंग विच आई एंजॉय डूइंग एंड आई कैन एक्चुअली एक्सेल एट इट. तो वहाँ पे आप वो ट्राई करो. हो सकता है इट डजंट वर्क आउट, इट्स ओके. देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर. अभी हर चीज में इतना पैसा है जिसकी लिमिट ही नहीं है. मतलब आई टेल यू हाउ बिंज स्टार्टेड. तो बिंज में both of my co-founders, they were YouTube strategists, they were working with creators, right? तो I figured कि Shark Tank आया है, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं कि वही 5 founders हैं इंडिया में, वही 5 VCs है, वही 5 लोगों के पास पैसा है. All the others will feel FOMO now, क्योंकि उनको भी social credibility चाहिए. तो हमने कि these people have money, these people won't also be getting involved so much like creators do. So भसड़ कम करो, पैसा ज़्यादा लेते हैं, और extra premium पे let's get these people onboarded and let's work with founders and VCs. And that became the game changer, right? जहाँ पे a creator would pay, let's say, for YouTube strategy editing end to end, they'll pay 50,000, 60,000. वहाँ पे we can go for 5 lakh rupees a month. और वो रिटेनर भी इतना होगा बिकॉज उनको मतलब नहीं है. यू आर द प्रोफेशनल, आप काम करो, तो क्रिएटिव फ्रीडम भी आपको पूरा मिलता है, राइट? दैट वन स्मॉल इनसाइट, वो एक नया कैटेगरी क्रिएट होगा. आई वेरी प्राउडली से कि बिंज लैब्स इज द ओनली कंपनी जिसने एक कैटेगरी क्रिएट किया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, जहाँ पे पीपल विद एक्चुअल सब्सटेंस, एक्चुअली डन समथिंग, आर गिविंग बिजनेस ज्ञान, राइट?
नॉट रैंडम इंस्टाग्राम और यूट्यूबर जहाँ पे जिन्होंने खुद ने बिजनेस किया और बिजनेस की स्टडीज बना रहे, राइट? दैट्स नॉट. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप an eye for opportunities. It's very important to try them. It's very important to fail. It's very important to come back again and try again, because something will crack and you'll be like, "Acha, this is what something I want to do." And having said that, I am not against jobs. In fact, I envy people who are in jobs because mental peace Stable रहता है. income. 8 बजे बाद कंपनी में आग लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, right? That's the whole point. आपने लैपटॉप बंद कर दिया उसके बाद आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है कंपनी में. So I envy them, of course, कि वो mental peace शायद नहीं है. But again, I love the thrill. I love the what it takes. So that's what it is. Absolutely, yaar. Even when you said that about like working multiple internships just to figure out what your interest is, I think I did that. I was very sure. Okay, when I finished my undergraduation, I was like, I want to do equity research. I was sure of it. And I went and got an internship in equity research. This was while I was studying for my undergraduation, in fact. And I didn't just get one internship. I got 3 different internships at 3 different companies doing the same equity research. And after those 3 internships, which was essentially 3 internships over 2 years, I was like, this is not what I want to do at all. This is something which is not interesting me at all. So then I was like, I googled the next best thing. What? Just guess what it was. उस टाइम पे तो क्या होगा, इक्विटी रिसर्च के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या वीसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और पीए तीन निकल के आते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई वाज लाइक अभी तो यही करेंगे. बाय द वे गाइस, वी टीच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मनी मॉनिटर. हां, कैरी ऑन. So investment banking, got a job at Axis Capital in mergers and acquisitions, and this was not an internship, this was a proper job where I was committed कि चलो this is what I will do. Okay. Only to realize 6 months down the line that bro, this is not something I can do. It requires too much of my time, commitment, effort, 100%. And there is zero work-life balance. I was 100%. Like, नहीं करेंगे ये तो नहीं करेंगे. Somehow pulled through for a year, and then is when I landed my job doing, private wealth. And that was something that I really enjoyed for 5 years. So, yeah, you can't really find what you like based on Google searches. That tells us कि you might be good at something, but you might not like doing it. Yeah. Right. I think that's how we can sum it up. कि ठीक है, you might be good at a lot of things, but you have to find that one thing which you are good at, and or you might get good at, and you also like doing it. Yeah. That's the main key, I feel. कि अगर आपको मजा आ रहा है काम करने तो नहीं भी आता तो आप सीख लोगे. Yeah. ठीक है. अगर आप जबरदस्ती just because it has good money, just because it gives you that satisfaction कि अच्छा मुझे ये बोलने मिल रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, इसके लिए मैं बैंकर बनना हूँ, तो that doesn't make sense. You'll hate yourself down the line. You're gonna regret doing it for the rest of your life. Being stuck. So figuring that out is something is what I feel. अभी जैसे सेम फील्ड में हो सकता है someone enjoys it, right? I know जो हमारा ट्रेनर है IB का, प्रवीण संचेती, उसको 4.5 साल हो गया अभी IB के अंदर. He loves it. He loves that lifestyle. उसको चाहिए, because उसको क्या खुशी देता है कि वो टॉप के इन्वेस्टर्स से और फाउंडर्स से इन सब से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है. Networking with and he loves that life. So it's okay for him, right? Yeah, so no, it depends. It's not good or bad. The thing is, it has to be good, or it has to work for you. Good or bad for you. 100%. So you mentioned about teaching students at the grassroots level about finance. You said something about teaching kids in the 9th and the 9th to the 12th grade. Tell us a little bit about that, because we all know how much you love giving talks and speeches in colleges. How did this come about? So my love for teaching and speaking on stage, it's something which is related to my childhood trauma. So please tell us a little bit more about this trauma. So a lot of people, they're like, अरे मेरे को stage पे I feel scared, ये वो करके. मतलब बिल्कुल कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? Because back when I was in 5th standard, 4th standard or something, so I used to study in the school which was owned by my family only. So my mom goes to my class teacher and she's like कि किसी भी competition में अगर इसका नाम नहीं लिखा गया, you are fired. ठीक है. Next week I'm in Rakhi making competition, making Rakhi with all the girls of my class. I'm taking part in Rangoli making competition, Diya making competition, and debates and all also. But these are the traumas, right? So शर्म इतना निकल गया कि अब कुछ भी करवा लो, सब कर लेंगे, ऐसा वाला. ठीक है. So I used to recite Sanskrit श्लोक in the assembly. विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाधर्म में ततः सुखम, राइट? सो ये सब कर लिया है. स्टेज पे डेली का ये सब करना, कोई भी स्पीच देना, डिबेट्स में जाना एंड ऑल दोस थिंग्स. सो
right from there, I was very good at it, maybe, or maybe I became good at it eventually. So now it's like a love for me, malab, being on stage, because that is the most uncomfortable situation you can put yourself in, right? 500 लोग सामने बैठे हैं, 1000 आंखें आपको रेगुलरली देखी, you have to make sense every single second you speak, right? Else they'll just drift away or they'll start talking and then you will feel underconfident. So you have to make sense every single second. Okay? So I don't script my talks at all. I don't prepare at all. It's always impromptu. It's always on the stage. It's always like कि चलो ठीक है देखते क्या होगा, right? And it's been good, I think, so far. तो उतना uncomfortable चीज आप जब कर लेते हो ना, तो आपको next level confidence आता है. So I can say this with confidence कि if you can speak on stage, you can give the best of the interviews in your life. You can take the best of the meetings. You can bring the most business. If even if you're working somewhere or whatever, वो कॉन्फिडेंस ही आपको इतना आ जाएगा कि अगर आपने 500 लोग के सामने बोला है तो एक जने को तो इम्प्रेस कर ही सकते हो, राइट? सो that's what it gives me, that thrill of proving myself back to back in front of 500-600 people who are watching me offline in front of me live. तो उन सब को हुक करके रखना is something which I love doing. The best story I have of teaching or maybe speaking on a stage is when I was speaking at KJ Somaiya College. मेरा स्पीच था, उसके बाद अश्नीर ग्रोवर का स्पीच था, राइट? आई वेंट ऑन द स्टेज एंड एवरीवन वाज लाइक वी वांट अश्नीर, वी वांट अश्नीर, वी वांट अश्नीर. अब नाउ दैट्स समथिंग आई नेवर एक्सपीरियंस. आप कॉलेज में जाओगे, पीपल नो यू थोड़ा बहुत एंड they'll expect and they'll give you a good round of applause when you come in. This was unheard of. तो हम लाइक अब क्या करूं? अब मुझे इतना पता है कि जब भी आउट ऑफ कंट्रोल क्राउड जाता है, यू हैव टू से आइदर सम एक्सट्रीम थिंग्स और डू समथिंग वेरी एक्सट्रीम, राइट? तो इट्स लाइक कि लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट 2 minutes, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. अब लाइफ एंड डेथ बोलते ही सब एकदम चुप हो गए, राइट? तो हम बोला कि a small fire broke out in a small cafe in US which changed the firefighting norms of the entire nation. अब वो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है. ये बंदा पहले लाइफ एंड डेथ बोलता है, फिर यूएस बोल रहा है, फिर फायर बोल रहा है, क्या? तो हमने यू टेल मी व्हाई कि एक स्मॉल फायर जो कैफे में, उसकी फायर फाइटिंग नॉर्म्स नेशन के कैसे चेंज हो गए. सब अपना अपना assumption लगा रहे हैं, ऑफ कोर्स दे वर रॉन्ग. तो मैंने बताया कि सो इट हैपेंड लाइक कि जैसे ही फायर लगा वहां पे, तो लोग दे रश टुवर्ड्स द डोर. इट वाज अ रिवॉल्विंग डोर, ठीक है? अब सब दोनों साइड से वो ब्लॉक हो गया, तो वो खुल ही नहीं पा रहा बिकॉज इतने सारे लोग पीछे हैं. द सेकंड डोर विच वाज देयर, वो भी नहीं खुला. टर्न्स आउट इट वाज नॉट अ पुश डोर, इट वाज अ पुल डोर. सब लोग वहां पे, हाँ, या ये बोलते बोलते आई गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज और मैंने ऑडिटोरियम का गेट को पुश करके खोलना चाहा, वो नहीं खुला. इट वाज अ पुल डोर. हमने कि अगर मैं ये स्टोरी नहीं सुनाता और ऑडिटोरियम में आग लगता, तुम सब लोग गेट की तरफ भागते और खोल नहीं पाते बिकॉज इट इज अ पुल डोर, नॉट अ पुश डोर. ये बोलते बोलते आई केम बैक ऑन द स्टेज. Turns out this is a fake story which I just built up to get your attention, and this is the art of storytelling which I'm going to teach you today. And that's when I got a standing ovation, and I spoke for extra half an hour while Ashneer was waiting. Oh wow! And I got this idea because when I was entering the hall, तो मेरे को डोर नहीं खुला था, तो पुल पुश का प्रॉब्लम था, तो उससे I just connected the dots. Oh my god! But that is something, right? Like to make this up on the spot. You have to and do something in a high extreme. pressure situation where people are sort of like dissing you or whatever, जोर से saying we want Ashneer Grover, तो यार superb. That's on the spot thinking. Yeah, Crazy. that's something I love. अभी recent में there's this one college, तो वहाँ पे they were not dissing or something, but like सब involved अपना बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं जाके बोलने लगा, यार तुमको मुझे सुनना पड़ेगा, मैं बहुत मेहनत से आया हूँ, मैं दिन में 20 घंटे काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. वो मैंने क्यों बोला? बिकॉज उसके पहले वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर गया था जिसने ये स्टेटमेंट दिया था और फिर ट्वीट किया था और उसको बहुत डिस हुआ था, सबको पता था वो स्टोरी. तो मैंने वो बोला, तो इट वॉज लाइक अ मोमेंट फॉर देम. जब उनको सुना साइड में, अच्छा ये 20 घंटे कुछ बोल रहा है, बोला अच्छा ठीक है. So when they started laughing, and then that's when I had them, and they're like, now let's take up. So you have to do all these things to get their attention. Crazy. So we're in this age of social media, and everything gets discussed and debated so much. And one debate that is had very often is about renting a home versus buying a home. Oh, I love this. And every single person has their own take on it. Yeah. So I'd love to hear what you think about this. See, outrightly coming and saying कि है ना, so I'll tell you, this is related to how content works, okay? So when you challenge something which has been there for a while, so India में you have to have your home has been there for a while. When you come and challenge that statement, तो you will get all the Gen Z audience का attention. कि मेरे पापा ये बोलते हैं, अब उनके अगेंस्ट में एक आर्ग्यूमेंट मिल गया मेरे को. So I love that content.
कि अरे पापा आप क्या बोलते हो घर लेना नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों, बिकॉज आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट एंड आई वांट टू मेक माय स्पेस देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई even creators make this content, because they know कि this will get traction, right? But nothing is like a statement कि अच्छा renting is the best or buying home is the best. It's very 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 personal. Now when it comes to let's say renting a home, right? तो they outwardly come and say कि अरे देखो financial sense बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है. अरे dependencies देखो. If someone is living with their parents, would you want your parents to move every single year to a new house? ठीक है? Would you want to ask a landlord before even कोई नेल अगर लगाना है, कोई पेंटिंग लगाना है आपको वॉल पे, तो आपको लैंडलॉर्ड का झंझट चाहिए. तो ये बहुत ही पर्सनल रीजन हो गए. फिर ये हो गया कि अच्छा ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज आउट राइट देयर. जो अभी मैंने रिसेंटली किया, आई बॉट 2 places, वन इन पुणे एंड वन इन इंदौर. तो मैंने वहाँ किया कि नया बिल्डिंग बन रहा था, पहले मैंने ले लिया और एयरबिन में डाल दिया. अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स मैंने लिया, मैंने थोड़ा बहुत फर्नीचर वहाँ पे बेसिक लगाया 7-8 लाख का, एंड देन मैंने एयरबिन में डाल दिया, एंड आई एम मेकिंग सो मच मनी देयर. तो वो वाला जो पैसा आता है उससे आई एम स्पॉन्सरिंग माई रेंट हेयर, राइट? So you have to be smart about it. You have to figure it out कि अच्छा क्या how it works, right? आज I feel that home loan, जब भी debt की अपन बात करते हैं, there are 2 types of debt, good debt and bad debt. Home loan is a good debt only if you can afford it. ठीक है? वो एक हल्का सा साइडलाइन हो जाता है. तो होम लोन में क्या होता है कि आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व दैट होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा इन्फ्लेशन रेट से हल्का सा कम रहेगा, या फिर उसके एकदम बराबर रहेगा. नॉट दी व्हाट इज क्लेम्ड बट व्हाट इज द रियल इन्फ्लेशन रेट, उसके आसपास रहेगा, राइट? Now just imagine this, okay? If a bank is giving you a loan, a home loan, ठीक है? तो आप बैंक के पैसे से अपना घर ले रहे हो. 80 to 90% is what the bank sponsor, बाकी आपको खुद को बेयर करना पड़ता है, राइट? तो नाउ जो इन्फ्लेशन का लॉस होता है वो कौन बेयर कर रहा है? बैंक. बैंक का पैसा है, तो वो पैसे का वैल्यू कम हो रहा है. वो उस पर अपने शेयर या तो सिमिलर इंटरेस्ट ले रहा है या उससे कम ले रहा है. तो आई एम मेकिंग मनी व्हाइल आई एम टेकिंग होम लोन, राइट? तो वो मेक सेंस इफ आई कैन अफोर्ड टू टेक एन होम लोन. अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप आके बोलो कि अरे नहीं होम लोन बहुत अच्छा, तो मुझे लेना ही लेना है, कैसे भी करके आप ले लो. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई कम फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, राइट? सीकर वहां पे. तो और मेरे डैड का पूरा बिजनेस फाइनेंस साइड पे है, तो आई नो हाउ थिंग्स वर्क. सो वैल्यूएशन के जो ऑफिसर आता है उसको लोग क्या करते हैं, उसको 10,000 रुपए देंगे. 50 लाख का अगर उनका फ्लैट है, उसको बोलेंगे इसकी वैल्यू 80 लाख दिखा. और 80 लाख का 90% लोन 72 लाख सैंक्शन होके आएगा 50 लाख के हाउस की वैल्यू पे. Wow. Now can you afford that home loan? No, but it is happening. That is wrong. That home loan is wrong. कि आप वो नहीं कर सकते हो. You cannot like stretch your limits like this कि आप जबरदस्ती उसकी वैल्यू इन्फ्लेट करके दिखा दो. इसीलिए तो एनपीएस वगैरह बीच में बढ़ गए थे, बिकॉज हाउसेस की वैल्यू इन्फ्लेट हो रही थी, बिकॉज हमेशा थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होता है, एंड थर्ड पार्टी कैन बी बॉट इजीली. आप उनको 10,000 रुपए दो, वो आपको बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन लिख के देंगे, राइट? सो दिस हैपेंस एंड दिस इज बिग. आई नो पीपल who have 4-5 houses जिनका टोटल वैल्यू शायद 3 crore होगा, but they've taken loan on those 3 crore का houses worth 9 crore rupees. Wow. Yeah. That's so crazy. This is also there. ये practical insight है because I've worked in that industry. मुझे पता है कि अच्छा ये भी होता है. But this happens in tier 2 cities. Yeah, tier 1 में भी होता है. Wow. तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू एक्चुअली नीड अ होम. कि आपका सिटी डिसाइड आपको कहाँ पे चाहिए. तो 2 पर्पस आते हैं. आप सेल्फ पर्पस के लिए ले रहे हो, यूज के लिए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेना चाहते हो. उधर भी लोन का इंपॉर्टेंस बदल जाता है. अगर आप खुद के कंजम्पशन ले रहे हो, होम लोन की इंटरेस्ट रेट कम क्यों होती है? बिकॉज अगर मैं खुद रहने वाला हूँ, आई विल बी अटैच्ड टू इट, आई विल नॉट लेट इट गो, राइट? तो आई विल पे माई EMI. दैट इज व्हाई डिफॉल्ट रिस्क कम होता है. डिफॉल्ट रिस्क कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा एज कम्पेयर टू अ कार लोन और अ पर्सनल लोन, राइट? तो एक आपका इमोशंस अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम होता है, राइट? So when it comes to buying and renting, you just have to be smart about it. If you can plan things in such a way where the home loan is helping you instead of bothering you, that's where you win the game, right? कि आज मैंने एक घर लिया है, तो मैंने उसका जो होम लोन लिया, उसके बाद मैंने हाउस इंप्रूवमेंट लोन भी लिया है, which is 0.6% higher than the normal home loan interest rate. मैंने वो इसलिए लिया बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास उस जो पैसा मेरे पास पड़ा है उसका बेटर यूसेज है, जहाँ से मैं बेटर रिटर्न्स निकाल सकता हूँ. सो आई डिप्लॉय दोज फंड्स ओवर देयर and take a home loan for my house जितना मैं ले सकता हूँ maximum, right? So you have to just be smart about it. You have to understand the entire concept of do you need the house for self consumption or not, yes or no. आपको इन्वेस्टमेंट के लिए yes or no. इन्वेस्टमेंट में जाओगे तो आप उस कैलकुलेशन में घुसो कि कितना ROI है, कितना रेंटल इनकम आता है. अगर मान लो आप मुंबई में आके टॉप लोकेशन में जाके बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लैट लेके और एक्सपेक्टिंग कि यू विल गेट 12% 13% रिटर्न ऑफ इट, इट्स नॉट पॉसिबल. ऑफ कोर्स सेटिंग असाइड कि उसका वैल्यू कितना इंक्रीज होगा वो सब अदर बात है, बट स्टिल इट डजंट मेक सेंस. सो वो चीज़ें अभी नासिक इज समथिंग जहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यूज बड़ा भर रहा है. तो उधर मेरे कुछ क्लाइंट्स जो फ्लिपिंग करते हैं, फ्लिपिंग इन द सेंस कि अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है
उसका भूमि पूजन हुआ है, वहाँ पे दिल बुक द फ्लैट, वहाँ पे रेट्स अलग होते हैं, दे नो कि अच्छा बिल्डर है, ये जब लॉन्च होगा उसका वैल्यू एटलीस्ट 1.5x होगा, तो मैं तब बेच दूंगा, वो भी चलता है. सो सबका पर्पस अलग अलग है, तो ऑफकोर्स सोल्यूशन भी अलग अलग होगा. इट यू कैन नॉट जस्ट सम इट अप इन अ मिनट का रील कि अच्छा तुम रेंटिंग करो, या रेंटिंग बेस्ट है, बाइंग बाइंग करो करो, या बाइंग बेस्ट है. इट्स नॉट द केस. So you mentioned that you have multiple active businesses. Tell us a couple of traits that it takes to have a great business mindset. The one word I would say which stops anyone to do a business is THINK, think, right? And that's been there for a long time in everyone's mind, because when you're in a classroom, you're a student, you will think before raising your hand in front of a teacher कि अरे मुझे आता तो है but बेइज्जती हो जाएगा. I tell them कि यार तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है तो तुम बेइज्जती से क्यों डर रहे हो, because you have to make it right. अब जैसे I'll tell you how money monitor started. So मैं कोविड आया, मैं मेरे दोस्तों को ज्ञान दे रहा हूँ मेरे होम टाउन में कि तुम इन्वेस्ट क्या करो, ये क्या करो. अब दोस्त ऑफकोर्स नहीं सुनेंगे. सो 1% लाइक हमको ज्ञान मत दे, तू भी वेबिनार कर ले, कि उस टाइम पे सब वेबिनार कर रहे थे. वो बोला कर लूंगा. बोल तू नहीं करेगा बेट लगा, 5,000 रुपये का बेट लगा. सो आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई से दिस स्टेटमेंट दैट आई स्टार्टेड माई एडटेक कंपनी एट जीरो कॉस्ट. व्हाट आई डू, रात को बैठा, गूगल फॉर्म बनाया, जीरो कॉस्ट, मैंने इंट्रो बताया क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल्स भरो, सबमिट में. वहाँ पे यू कैन लिंक रेजर पे, राइट? रेजर पे डजंट चार्ज यू अप फ्रंट, वो आपके रेवेन्यू में से 2.8% लेता है, अगेन फ्री. रेजर पे के सक्सेस पेज पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाल दिया, अगेन फ्री. व्हाट्सएप ग्रुप पे उस टाइम पे जूम फ्री था. तो नाउ आई विल सेंड दैट गूगल फॉर्म टू ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड द पीपल आई नो एंड एवरीथिंग. वो सर्कुलेट हुआ काफी, उसके अंदर से लोगों ने रजिस्टर किया, दे केम टू द व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा एडटेक कंपनी शुरू हो गया. दैट्स इट, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, राइट? आई टॉट 83 people in the first batch, and till now there have been 37 batches, and zero paid marketing, zero inorganic marketing, zero performance marketing, and we have crossed 10,000 students, right? So what I always feel that to start a business, all you need is just one belief maybe, or like a one moment of वो एकदम कि आप कर लेते हैं, देखा जाएगा क्या होगा. That's one thing you need, that's it, right? उसके बाद फिर I was teaching alone, right? इन्वेस्टमेंट में सिखा रहा हूँ, पर्सनल फाइनेंस में सिखा रहा हूँ. फिर आई फिगर्ड कि यार बहुत सारी चीजें होती है फाइनेंस के अंदर which are not covered and people would want to know. Like credit cards is very important to learn, because credit cards में लोग कुछ भी कर रहे हैं. तो I got someone, he is the guy who lives in a new country every month. He stays at the presidential suite of the best hotel in that country, and he always travels first class, all by his credit card points. So he will come and teach कि credit card कैसे use करने हैं, ठीक है? My own sister is coming to teach कि टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है, टैक्स में सेविंग कैसे करनी है. मेरे डैड विल बी टीचिंग डेट प्लानिंग कैसे करनी है, बिकॉज वो डेट में ही इज बिग ऑन फाइनेंस साइड, राइट? माय अदर टीचर्स आर, समवन इज टीचिंग पर्सनल फाइनेंस, समवन इज टीचिंग समथिंग एल्स. सेकंड कैटेगरी में बोला कि क्या बोलते हैं, व्हेनेवर समवन हायर्स, लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फिर पीई में, वीसी किसी में, when they hire someone they have to spend a lot in training them for 2 months, 3 months or whatever. What if I get a seasoned investment banker in the company to teach over the weekends that what an investment banker does practically? Financial model बनाना सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. I got someone, they are teaching, and that course is a hit because people actually want to learn कि हमको घुसना कैसे, because there is no course. कि आपने CFA कर लिया तो बैंकर नहीं बन गए आप. पूरे इंडिया में आई थिंक देयर आर 700 to 800 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, दैट्स इट. बैंकर्स इतने ही हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. तो इतना, क्योंकि वो बहुत एस्पिरेशनल फील्ड. यू स्टार्ट विद अ वेरी हाई पैकेज, यू स्टार्ट विद 20-30 एक्सेप्ट बोनस, राइट? तो उस फील्ड में अगर आपको घुसना है तो ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स. नाउ इमेजिन वन पर्सन सिटिंग इन इंटरव्यू विद एन एकेडमिक नॉलेज, बट वन पर्सन सिटिंग हु हैज मेड एन एक्चुअल फाइनेंशियल मॉडल. तो वो एक डिफरेंस आता है वहाँ पे, राइट? तो हमने कि एक प्रोफेशनल कैटेगरी लॉन्च करते हैं. अगर इफ वी कैन इवेंचुअली गेट देम प्लेस्ड आल्सो, आई कैन like claim a very high ticket size ka course, because what Scalar has done to the coding field, Scalar charges 2.8 lakh rupees to teach you coding. The only thing is that they get you placed, and that's why they're able to command that higher price, right? And they have done great revenues, great wo. That was my inspiration कि अच्छा ठीक है, एक proper platform बनाएंगे, we'll get different category. Finance is, you know, it's such a vast field जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. फिर third category में लगा कि चलो ठीक है, एक insight ये आई कि for these skill based courses और थोड़ा soft skill side पे जाके parents don't pay, so we have to price it lower so that students can afford. But academic जहाँ पे आ जाए, डिग्री जहाँ पे आ जाए, parents are paying, you can charge more. तो हम लाइक कि ठीक है, एक्चुअलीज में घुसते हैं. उसमें इनसाइट ये था, एक्चुअलीज में 15 लेवल होते हैं, तो मेरा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत हाई है.
और उसमें एक सबसे बड़ा इंसाइट था कि 3 लेवल्स भी अगर आप कर ले तो आप जॉब ले सकते हो, राइट. तो किसी ने मेरे पास से 3 लेवल कर लिए, जॉब ले लिया, वो बाकी के 12 लेवल भी मेरे पास करेगा, राइट. सो वो इंसाइट पे भी प्लेड वेल कि लाइक नाउ देयर आर 3 कैटेगरीज, एकेडमिक, प्रोफेशनल, फाइनेंस अपस्किलिंग, राइट. सो दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट. तो वही है कि आपको कोई इंसाइट आई, यू वर्क ऑन इट, यू फिगर इट आउट, डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकल, टेस्ट करो उसको. तुरंत जाके अभी क्या होता है राइट नाउ, व्हाट आई टेल यू द स्ट्रक्चर इज टेम्पलेटाइज हो गया. आई गेट एन आइडिया, आई विल थोड़ा सा मैं रिसर्च करूंगा, टाइम पास गूगल 10 मिनट का, आई विल फिगर अरे ग्रेट आइडिया, मजा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा. फिर लाइक अब चैलेंज क्या है, पहला चैलेंज लोगों को लगता है फंडिंग. तो उनको फंड चाहिए, फंड चाहिए, फंड चाहिए. बट राइट नाउ दे आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपकी फ्री वेबसाइट बनती है, आप डोमेन बहुत सस्ते में खरीद सकते हो. रेजर पे जैसे बहुत सारी इनेबलर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका नेटवर्क है, वो इंटीग्रेट कर सकते हैं. यू कैन लॉन्च वॉट एवर यू वॉन्ट. दे लिटरली प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे यू कैन स्टार्ट योर ओन उबर टुमारो. उबर का टेम्पलेटाइज्ड कोड अवेलेबल है, आप जाके कर दो. यू जस्ट नीड टू नाउ फाइंड द ड्राइवर्स एंड कस्टमर्स, राइट. प्रॉपर कोडेड फोन पे का बैकएंड अवेलेबल है, आप जाओ, आपकी खुद की ऐप तैयार हो जाएगी. यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट. प्लस when I go to colleges, I ask people, do you know about India Stack? क्या हो रहा है, क्या नहीं? No one has a clue. But the best startup right now in India is Zerodha. It is not built by Nikhil Kamath. It is not built by Nitin Kamath. It is built by the government of India. I'll explain how. India Stack में पहला लेयर है आइडेंटिटी लेयर, जिसमें KYC होता है, आधार KYC. Yes, आधार KYC में इन्होंने ये इंसाइट लिया कि चलो ठीक है, एक डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म है इसकी आइडेंटिटी जानने का. नाउ दे फिगर्ड कि द नेक्स्ट जनरेशन वुड नॉट वांट टू गो टू अ सब ब्रोकर्स ऑफिस एंड साइन अ फॉर्म. सो आइडेंटिटी करके अपन KYC इंटीग्रेट करते हैं. फर्स्ट लेयर. सेकंड लेयर है जहां पे उन्होंने IMPS इंट्रोड्यूस किया था, जो सारे बैंक यूज करते हैं, राइट. सो वो उसके ऊपर बिल्ड हुआ था, पेमेंट लेयर जो जिसको अपन बोलते हैं. उसी के साथ UPI इंटीग्रेट हुआ है, बाकी सब चीजें हुई है. तो वो हुआ. डिजी लॉकर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया स्टैक. डिजी लॉकर से आप सारे डॉक्यूमेंट्स फेच कर सकते हो. सो वंस यू लॉग इन ऑन Zerodha, साइन अप ऑन Zerodha, you do your Aadhaar OTP thing, then you fetch your documents from DigiLocker, and then you have a platform जहाँ पे you can get your funds from IMPS or UPI, which is the payments layer of India Stack, and then you can start trading. So same thing which brokers were doing, these people did with a public API. So now what I mean by public API is India Stack is nothing but public API. आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट में किसी का आइडेंटिफिकेशन, you can include Aadhaar KYC there. You can have Aadhaar OTP का सिस्टम on your website, and that is for free. उसके बाद उसका कोई ट्रांजैक्शन बेस्ड चार्ज कुछ इनेबलर्स में लगता है, बट द गवर्नमेंट डजंट चार्जेस. दैट इज कॉल्ड पब्लिक API. ठीक है. उसके बाद आप आ जाते हो नेक्स्ट पेमेंट लेयर पे, IMPS. एवरीवन इज यूजिंग इट. सो राइट नाउ इफ आई वांट टू स्टार्ट अ पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, मैं बबल पे जाऊंगा. बबल एक नो कोड ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप फोन पे का बैकएंड बना सकते हो. उसमें NPCI में एप्लीकेशन लगेगा, जहां पे आप UPI का एप्लीकेशन अप्रूव करवा सकते हो. इट विल बी अप्रूव्ड इन 1.5 months, एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन फोन पे इन 1.5 months फॉर फ्री. That's how easy it is to start a business. But लोगों को लगता है नहीं, फंडिंग देनी है, शार्क टैंक में जाना है, ये करना है, वो करना है. Zerodha, the entire application, the entire company is built by government of India, enabled by India Stack completely. Wow. So even if you see some of the interviews of Nitin Kamath, वो ये बोलता है, बोले Zerodha चेंज हो गया जब कैलाश नाथ आया. कैलाश नाथ है टेक गाय. तो कैलाश नाथ ने बोला कि यार ये सब गवर्नमेंट दे दी, इसको यूज करते हैं ना, इसी से ईज हो जाएगा प्रोसेस पे अपन कैपिटलाइज कर लेंगे. Literally every feature is every single feature is by Indian government. Yeah. So the biggest startup of India, if that can start without funding and they can just use what is available to you guys, so it's crazy, right? And आज I think we don't realize the importance of the entire India stack because अपने को पता ही नहीं है. So जब आधार वाला आया तो it was 2005 or 6, जब नंदन नीलकंठे को गवर्नमेंट ने बोला कि हमको आप एक यूनिक आईडी बना के दो. It was his insight कि मैं उसको डिजिटाइज भी करूंगा. So he created a unique digital ID which was आधार. उसके बाद जनधन योजना आया, आधार को पैन से लिंक करवाया और बैंक अकाउंट पे लेके आए, सो दैट सारी चीजें ट्रैक हो पाए. नाउ नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने IMPS लेके आया और UPI लेके आया. नाउ दे आर इंक्लूडिंग अ हेल्थ लेयर. UHI इज कमिंग. व्हाट इज UHI? यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस. नाउ हाउ कूल दैट इज, अंडरस्टैंड कि आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे, आपका आधार कार्ड वो नंबर लेते हैं, राइट. ऑल योर हेल्थ रिकॉर्ड्स विल बी सिंक्ड टू योर आधार. Now let's say a pandemic comes, ठीक है, it is affecting diabetic people more. हो सकता है मुंबई से डायबिटिक पीपल पुणे में हो, तो वैक्सीन अगर अपन स्ट्रेटेजी देखें तो वो लोग मुंबई में ज्यादा भेज देंगे. बट नाउ बिकॉज ऑफ UHI they will send more vaccines to Pune. They will have exact number of vaccines जो उनको पुणे में भेजनी. OCAN has come, Open Credit Enablement Network. What does that do? If you are someone जो
टॉप ऑफ द पीपल में नहीं आते जो लोग लोन्स लेते हैं. सो मेरे पापा बोलते हैं लोन केवल उनके पास होता है जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, वही लोन ले पाते हैं. राइट. तो फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू टेक लोन्स, उनके लिए ओकेन लेके आए, ओपन क्रेडिट नेटवर्क. उसमें क्या होता है कि जितनी भी, सो लेट्स से यू आर अ सैलरीड पर्सन, आपको अगर लोन देना है, मुझे ज्यादा कुछ चेक नहीं करना, आपकी सैलरी स्लिप देख लिया, मैं समझ गया कितना सैलरी आता है. बिजनेस में आई हैव टू एक्चुअली चेक कितना हो रहा है, क्या हो रहा है. थोड़े फाइनेंशियल नहीं है, जिसके फाइनेंशियल्स नहीं है उसका मैं जाके, मान लो एक पानी पूरी वाला है, उसको लोन देना है. सो बैंक का एक एम्प्लॉय जाता है, वो 3 घंटे ऑब्जर्व करेगा कितनी प्लेट्स है डस्टबिन में, उससे वो कैलकुलेट करते कितना कमाता होगा, एंड देन दे गिव लोन. तो अब इसमें कॉस्ट बढ़ जाता है. सो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये वाली कॉस्ट हम बेयर करेंगे, आप इनको लोन्स दो. OCEN, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क. These all things are part of India stack. People need to learn about it, study about it, because and utilize it. Yeah, India stack में ही सारी opportunities भरी पड़ी है. I would say, if especially अगर fintech में start करना है, किसी चीज में start करना है, तो I think that's something which is there. तो लोगों को समझना जरूरी है और जानना जरूरी है. And opportunities are out there. Next level opportunities है. Enablers बहुत हैं. Easy बहुत हो गया सब कुछ करना. So now you've told us about the business mindset, you know, which will help you start a business. But there's always that one apprehension that people have कि चलो कुछ start तो कर लेंगे, पर वो पहला client, how are we going to get that first client? So there's a saying called पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कागज से ले. ठीक है. Now what people right now do is, let's say, I'm sure you also get this, Instagram पे मेरे को रोज DM आता है, can I be your video editor, right? आप they're just expecting out of you कि अच्छा हाँ बोलोगे, हाँ we want a video editor, आप बताओ कैसे काम करते. It's not gonna happen, right? And they consider that effort, they consider that cold reach out. That's not cold reach out. I'll tell you how it should be done. So once I was in a Bangalore एक seminar था, I was discussing with a few people the idea of money models, कि what I want to do with this and blah blah. And those early stages of when I was thinking about it. तो there was this guy in a proper hoodie, full coder vibes. वो बाजू में बैठा था उस सोफे पे. We didn't pay attention. He was listening to the entire conversation apparently. After our talk was over, उसके बाद he approached me. He's like कि this is your website. He created it in that 1 hour. He built one homepage of money models based on what I was talking about it. And he built that, he bought the domain. I'm like कि okay, he was a 14-year-old kid. वो मुझे बोलता है कि now you have to at least buy this domain from me. Because domain तो आपके पास नहीं था, वो मैंने खरीद लिया. He sold that domain to me for 1 lakh rupees. And then he approached me and he's like, if you want me as a website designer, I will charge you 80,000 rupees. And I had to pay him. And उसके बाद से he has been regular in my company. And he has made way much more money. Wow. There was this one guy who once approached me. तो बहुत होते हैं जो बोलते हैं we'll design websites for you ये वो करके. There's one guy who just mailed me www.sushantbindal.com. He took that domain. हाँ. और मुझे मेल आया. अब मुझे मेल में सब्जेक्ट में मेरा नाम का वेबसाइट दिख रहा है. मुझे लगा किसी एक्स ने बना दी होगी मेरे पे हेट करते हुए. तो मैं देखा जाके एक्चुअली मेरा पर्सनल पूरा डेटा निकाल के, मेरे कंटेंट निकाल के उसने मेरी वेबसाइट बनाई हुई थी. You can schedule a call with Sushant for business consulting, blah 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 blah. Crazy, right? So these people will get business. Okay? If you actually do something first. हवा में बस सोचते ही रहोगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये कर लेंगे तो नहीं होगा. You have to first see कि अच्छा ठीक है, there are 10-15 creators जिनका पर्सनल वेबसाइट नहीं है. लेट मी, और उसमें एक टेम्पलेट लगता है. आपने एक बार टेम्पलेट बनाया, फिर बस फोटोज चेंज करनी है, थोड़ा कंटेंट चेंज करना है. इट हार्डली टेक अ टाइम. सबके डोमेन खरीद लो. 50 रुपये में डोमेन खरीदते हैं आजकल. ठीक है, GoDaddy पे जाओ, होस्टिंग पे जाओ, 50 रुपीज 500 रुपीज मैक्सिमम. उससे ऊपर में डोमेन नहीं आता, बिकॉज पर्सनल नाम का डोमेन का इतना वैल्यू नहीं होता है. तो दे जस्ट डू इट ऐसे ही. तो वो खरीद लो. उनको बस वो डोमेन आप मेल करो, वो पागल हो जाएंगे. That's how simple it is. So, but you actually have to, spend Do time, something, effort, yeah. work, do something, and then you'll get something. Yeah. So वो give and take वाला बात. Last I was meeting Ashwin, तो Ashwin ने बोला कि भाई we met, we were never met. हम लोग podcast पे first time मिले. उसके पहले we were just talking on phones and all. तो मेरे को पूछता है कि यार you always just randomly refer me to people. You give me business. You never take something. Why are you doing this? I'm like, it will come. Because that's how it has been with me. I have done things for people and they've come back in ways I've never imagined, right? So that's how it happens. So I think that's how one can actually go out there and start building something instead of just thinking about it and being like, अरे ये करना है. Because अपने mind का एक property है कि when you start thinking, you'll first think the negative things. And negative thoughts का एक property है कि वो multiply बहुत जल्दी होते हैं, right? तो उसको avoid करके, there's this 2013 या 14 की बात है. There's this Inc talk by Varun Agarwal. That's what actually affected me the most कि यार ये entrepreneur बनना है. वो word वहाँ से click हुआ. Business करना है वो पता है,
वो मैंडेटरी, वो लिख गया कुंडली में तुम्हारी. लेकिन entrepreneur जो वर्ड का वो था ना, वो मेरे को स्टॉक, दैट्स अ क्रेजी टॉक. दैट्स वेयर द एनालॉजी ऑफ थिंक और डोंट थिंक वाला केम टू मी. So crazy, that talk is something which I always recommend to people to watch. It's a very good talk. Nice. Yeah. Interesting. So you also mentioned you're doing something in the education space for youngsters, Mm-hmm. schools, colleges, stuff like that. Hmm. Tell me a little bit more about that. What exactly are you doing over there? So it's not just for youngsters. That's How one are of we our trying to things. change the entire system Hmm. where a topic like finance has not been spoken about Mhm. ever, Mm-hmm. and now how are we getting kids in school to learn about it? That's where the gap is, right? So that's what I figured कि तो हुआ क्या था, one of my dad's friends, he's a big doctor and all. तो डैड ने बोला कि इनका देख इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे क्या चल रहा है. तो ही वाज लाइक कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है, बहुत सही चल रहा है. बोला कि स्टेटमेंट्स मुझे भेजो, मैं देखता हूँ. टर्न्स आउट ही हैड हायर्ड अ गाय टू मैनेज हिज फाइनेंसेस. ही वाज पेइंग दैट गाय 50 lakh rupees a year to manage his funds. Basically invest his funds. 50 lakh rupees a as year. fees. Yeah. As How fixed big was the fees. portfolio? As fixed fees. This guy, तो he was super rich. मतलब Okay. 10-15 हॉस्पिटल है उसके, वैसा सीन है. तो super rich. 50 लाख रुपए दे रहे हैं किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड उसको रिटर्न्स आ रहे जो भी आ रहे, ही इज वेरी हैप्पी. आई कैलकुलेटेड द रिटर्न्स, मैंने इन्फ्लेशन लगाया, सब कुछ लगाया. टर्न्स आउट इन द लास्ट 4 years he had paid the guy more than what he had made him money. Oh my god. And he was not aware about it. And like कि इतना financial illiteracy है for someone who is running 15 hospitals. 15 hospitals. उसको भी नहीं पता कि वो लॉस कर रहा है अपने फंड्स पे. तो हाउ बिग द मार्केट इज व्हाट ट्रिगर्ड मी, राइट. आई एम लाइक कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. तो आई स्टार्टेड टीचिंग वहां पे. तो नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि फाइनेंस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. द लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे जरूरत है. तो मैंने 2 चीजें की है. आई हैव मेड 3 categories as I said, जहाँ पे फर्स्ट इज जहाँ पे वी टीच पीपल पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, trading, credit cards, tax planning, debt planning, and all those things which are for everyone. उधर टारगेट ऑडियंस सबको ही है. उधर मैंने 83-year-old के आदमी को भी पढ़ा है, उधर मैंने 18-year-old को भी पढ़ा है, राइट. इसमें कोई स्ट्रीम का रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप साइंस से आते हो, कॉमर्स से आते हो, आर्ट्स से आते हो, व्हाटएवर इट इज. यू हैव टू नो दीज थिंग्स. आपको पता होना चाहिए डेट कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए टैक्स कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होता है, राइट. फॉर एवरीवन. दिस इज द मोस्ट मासी कैटेगरी आई हैव. सेकंड कैटेगरी इज अ नीश कैटेगरी, जहाँ पे थोड़ा हाई टिकट साइज कोर्सेज होंगे, जहाँ पे पीपल वांट टू मेक अ करियर इन फाइनेंस. आईबी में घुसना है, पी में घुसना है, वीसी में घुसना है, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. थर्ड इज द एकेडमिक, जहाँ पे हम CFA, FRM और एक्चुअलीज पढ़ाने वाले, राइट. सो इसके साथ साथ मुझे समझ में आया कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि फ्रिक्शन है, पे करना पड़ेगा लोगों को कोर्सेज के लिए, आई हैव ऑल्सो क्रिएट अ फ्री कम्युनिटी ऑन माई ऐप. सो बेसिकली आई हैव कंबाइंड द इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड ट्विटर ऑफ फाइनेंस एट वन प्लेस. सो मेरे ऐप के ऊपर यू कैन ज्वाइन इन फॉर फ्री, यू कैन कम एंड यू कैन लर्न. तो द डिफरेंस इज, जहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रैंडमली एनीवन इज गिविंग फाइनेंस का ज्ञान, मेरे ओनली क्वालिफाइड पीपल आर गिविंग फाइनेंस का ज्ञान. So they can give gyan either in video format, audio format, text format. And you can randomly use it as a social media platform जहाँ पे आप like, comment, share सब कुछ कर सकते हो. I've made a proper feed out of it. So उधर ही community है जहाँ पे मैं WhatsApp को integrate कर दिया, जहाँ पे you can have your own finance community and talk to people about investments, finance. As simple as जहाँ पे आप WhatsApp पे type करते हो, यहाँ पे audio note, WhatsApp, whatever you can do. So 2 things I've done. One is for free, the community thing, and the second is जहाँ पे we actually teach people how can they do all these things in finance. Wow. So I know that you're great at managing money yourself and you probably don't need any tips from us. But do you have something that you want to ask us? Yeah, I wanted to understand from you. So you might be talking to a lot of people who want to maybe manage their funds or, plan it better, especially women. Yeah. So what are the common misconceptions you feel people have? And what are the major problems they're facing and why is it that? So I think the common misconception that most people have, be it women or men, is that they think that they can't do it themselves. They always feel that, yaar, how do I start? Where do I start? I don't know anything about finance. I don't know anything about stocks. I don't know anything about mutual funds. How do I make any investments? That is the most common problem. They just don't know where to start. The second thing is that they don't know that they can do it on their own. They always feel that they need some kind of an advisor or a broker or something like that. So I think these are a few common sort of misconceptions that people have. Women especially don't have that confidence.
Because don't you think- generationally people have made it such that women feel that they can't do this on their own. Hmm. They feel that they need help from their fathers or brothers or husbands or Hmm. whatever. Hmm. Not even help. They just feel like they need to allow them to do it Hmm. without having to bother about this part of their life. वो कॉन्फिडेंस ही नहीं वो दिया ना कि यू कैन confidence डू नहीं इट है, हाँ हाँ। कि वो कभी ट्राई नहीं किया लाइक अगर वो if let's say if the girls have been sent to like banks and all कि अच्छा तुम ये चेक वाला करवा के आओ ये करवा के आओ वो करवा के आओ तो ऑटोमेटिकली कौन है कि यार ठीक है इतना डिफिकल्ट नहीं दिस समथिंग आई कैन डू एंड And वो हो honestly, it's जाता not that difficult, yaar. Now you can very well do this on your own without, getting overwhelmed by the situation. Is not rocket science. and since the women actually they manage the entire budget of the entire house they can do it I think better 100%. in a lot They of can ways, 100% right? do it much better. Women are a little attuned towards managing finances well. It's just that they don't have the confidence to do it themselves. Fair. Also, So- don't you think like when people come towards investing, they come with a very built-up expectation of immense returns. Ki, Acha, this is what I want to do. That is the That's problem, it. right? Because when most people talk about investments Mhm. to us, what they talk about is stock market trading. Hmm. How to make a quick buck. Hmm. Which shares do I buy? Hmm. Those are the most common kind of questions that we get. Hmm. Stock tips. Hmm. अब दे दो. I kind But- of researched a lot on this part कि why is it so पता है Yeah. तो I'll tell you why is it so. So अभी क्या होता है ना बहुत टाइम पहले मेरे को एक मेल आया था कि this is the link to a fake Zerodha profit screenshot generator. So now what I have to do there is it's an app. I have to put in a script, a stock ka name. I have to put in quantity. I have to put in the price and I have to put in the amount. Okay. That will give me a screenshot of Zerodha जहाँ पे वो मेरा प्रॉफिट दिखाएगा एक पोर्टफोलियो का वहाँ पे जब वो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट जनरेट करेगा आई गेट एन ऑप्शन टू शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम and run ads on it. So what people do is this generate Even these, though they don't have that yeah, script. Yeah. So they upload that screenshot, they run ads on it, and they sell courses of trading of 10,000 rupees. Now, for a person, जो मैंने पहले एक example दिया था, ये कोई जो job कर रहा है, जिसकी EMIs है, he hates his job. He's making 50,000, 6,000 rupees a month. Now, when they see someone is making 2 lakh rupees a day, they'll be like, यार कितना ही difficult होगा. Yeah. Let's give it a shot. Yeah. So I come with a mindset that I can also make not 2 lakh but 1 lakh rupees a day. Yeah. Now when I approach it like that, that's the biggest mistake, biggest blunder I can ever do to my portfolio, to my money, to my finance and everything. Yeah. तो उधर I think वो mindset shift की बड़ी ज़रूरत है कि instead of that being कि अच्छा फटाफट से I'll become rich ऐसा Yeah. it should be Get like rich कि अच्छा fast. ठीक है वो आपको capitalize करना पड़ेगा over time वो compound होगा and that's how important it is gonna be for you. Yeah. Yeah, so I think वही mindset shift की ज़रूरत है कि you approach investments with a better frame of mind Yeah. by thinking that of course it's not gonna be like I'll be making 1 lakh 2 lakh rupees a day or 5 Yeah. lakh rupees a month. It should be more of like कि अच्छा ठीक है these are my options. What suits my mindset. अब हो सकता है कि you are someone जो बहुत ही पैनिक कर जाए तो of course trading is not for you. Of course short term investments are also not for you because every fluctuation will give you a heart attack. Yeah. अरे ये क्या हो गया ये क्या हो गया ये क्या हो Yeah. गया. So of course that you have to understand yourself first. What kind of person are you? ठीक है. If you are someone जो पैनिक बहुत ज़्यादा करता है तो आपको हो सकता है बहुत very long term आप चाहे स्टॉक्स में करो ही मत फिर आप ETFs में और म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दो. If you are someone जिसको चलता है वो मंथ में एक बार देखेगा चलेगा उतना कैजुअल है तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान करो. तो that's what needs to be done कि even that is a responsibility of the teachers also कि you teach them कि अच्छा ठीक है आपको अपने नेचर के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने पड़ेंगे. नॉट दैट कि अच्छा दिस इज द बेस्ट प्लान. कोई बेस्ट प्लान नहीं होता है. देयर इज नो बेस्ट It's not one size fits all. हाँ, No, कोई मॉडल नहीं है. Yeah, there is no model that is applicable to every single person. Yeah, It's yeah, very yeah, different yeah. for everybody. So I think that's what it is. You just need to understand yourself better to plan your funds better. Absolutely. I couldn't have said it better. Great. Thank you for being on the show Thank with you so us, much for having Sushant. It me. was such a good chat. Yeah, I loved it.